तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेटेंट के ऊपर। पेटेंट क्या है, पेटेंट का मीनिंग क्या है, इसके रिलेटेड टर्मिनोलॉजी क्या है, प्रोसीजर क्या है पेटेंट का, कैसे आप पेटेंट करेंगे या आपका प्रोडक्ट कैसे पेटेंट होगा, उसके ऊपर पढ़ने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कॉपीराइट के ऊपर। कॉपीराइट का मीनिंग क्या होता है, कॉपीराइट का टर्म एंड कंडीशन क्या है, कितने साल के लिए कॉपीराइट मिलता है, किस किस को कॉपीराइट मिलता है, एंड व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन द कॉपीराइट। And before that also we already discussed about intellectual property rights, how intellectual property rights works, what type of materials things included in intellectual property rights. So IPR copyright are almost already covered. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पेटेंट। पेटेंट के ऊपर थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब पहला बार है मीनिंग ऑफ पेटेंट। पेटेंट का मीनिंग क्या है? पेटेंट्स आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आई ऑलरेडी टोल्ड यू that intellectual property include various things. Intellectual property include various things. So intellectual property not rights, only intellectual property. The intellectual property includes copyright, patent, geographical indications, trademark. These all are included in intellectual property rights. So we already discussed about copyright and the meaning of intellectual property rights. So now we are going to discuss on patent, because these tools are very important. And sometimes geographical indication and term trademark also are important, but majorly these two are very much important. So patent क्या है? Patent are the oldest form of intellectual property right. This is the oldest form, means when the intellectual property right is developed, initially patents are very much used. Initially patents were very much used. So it is the oldest one. You can say if questions comes which of the following is the very oldest intellectual property, then option will be like copyright, patent, geographical indication, trademark. So the answer will be right in the patent only, because patent is the oldest form of IPR. So patent, what is patent? It is a right given to an inventor for a specific period of time for an invention. So it is a right given to an inventor. What is the meaning of inventor? Inventor means who is inventing, who is developing. Suppose you are developing a mobile, so you are the inventor. So what is patent? Patent is, it is a right given to the inventor for the specific period of time for an invention. So it is right given to the inventor for a specific time for his invention. So it is right given to the inventor for a specific period of time. Why this right is given? Because for the invention. So it is a right given to the inventor for a specific period of time for an invention. Invention may be a product, invention may be a device, invention may be a process, anything. So इन्वेंशन को यदि अगर किसी ने इन्वेंशन किया है तो उसको एक राइट मिलता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड पेटेंट. तो इट ग्रांट्स द इन्वेंटर right to sell or use the product. It allows the inventor. इसका मतलब यह है the inventor will be allowed to right to use the product, to share the product, to sell the product, anything. Here the inventor once get the patent right, he can do anything with his product. He can share it, he can sell it, he can use it, he can make some license so that other can use that. So in this way the inventor have some rights which are given through the patent. So Patent Act passed in 1970. The first Patent Act passed in 1970. इसको आप याद रखना है. This is very most important question. In 1970, the Patent Act has been passed. Criteria
of patenting. Criteria of patenting. इसका मीनिंग क्या है? What are the criteria of a product should include so that it could be patent? For example, criteria of patenting mean uh, like if you are developing a device, if you are developing a product, if you are developing a product, then the product should possess some criteria. The product should possess some criteria. After that, it will get patent. The criteria mean some eligibility of the product should be there. So minimum criteria should be there. Like it should be new. It should be socially impactful. Like this. Suppose I am giving some example, just prediction. So the product should be new. The product should be society positive effect to the society. So these are the criteria should be there so that the product will be get patented. So let's see what are the criteria of patenting. What are the criteria a product should have so that it could be get a patent? There are three criteria need to be fulfilled to patent an invention. Suppose you are inventing something, so at least three criteria that should be fulfilled so that you will get a patent. Number one is novelty. An invention must be new or novel. The invention must be new or novel. As I told you, whatever product you are developing, that should be new, not old one. It should be new or novel one. Non-obvious. An inventive step should be followed. इन्वेंटिव स्टेप शुड बी फॉलोड. इसको थोड़ा आपको समझना है. नॉन ऑब्वियसनेस मीन obvious means general. It should be general. Obviously mean general. The term obviously means general. Suppose you are developing a product. Suppose you are developing a product by using general normal steps. General normal steps. You are following normal steps like anything which has been followed by everyone. जो भी स्टेप आप फॉलो कर रहे हैं वो सब फॉलो कर रहे हैं. उसको फॉलो करके आपने एक प्रोडक्ट डेवलप किया तो ये ऑब्वियस नहीं है. तो ये ऑब्वियस है. सॉरी. तो ये ऑब्वियस है. अगर आप जनरल स्टेप्स को फॉलो करके कुछ प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, जो स्टेप को बाकी के लोग भी फॉलो करके वो प्रोडक्ट मतलब दूसरा प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो इट इज जनरल स्टेप. इट इज वेरी ऑब्वियस. So the patent product should be non-obvious. Non-obvious means some specific steps should be followed. Some specific steps should be followed to develop the product. Not a general step. General step means everyone is doing the general step. So specific step means you are following some unique step to develop a product. So that is called non-obvious. An inventive step should be followed. Inventive step means something, if you are following some step that should develop some new invention. So an inventive step should be followed to develop a patent. If you are developing a patent, if you are developing a product, if you want to get a patent, then in that case your development process should be in inventive step. शुड बी फॉलोड बाय ए इन्वेंटिव स्टेप. इन्वेंटिव स्टेप को फॉलो करना चाहिए. इन्वेंटिव स्टेप मतलब कुछ इनोवेटिव जिसे कहते हैं. इन्वेंटिव कुछ ऐसा स्टेप जिसमें कुछ नया निकलता है. इन्वेंटिव स्टेप सम स्टेप्स थ्रू व्हिच यू कैन डेवलप न्यू थिंग्स. सो ए इन्वेंटिव स्टेप शुड बी फॉलोड फॉर द प्रोडक्ट टू गेट पैटेंट. यूटिलिटी. इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ industrial application. It means whatever product you are developing, that should be capable of industrial application. That means that should be usable in industrial application. इंडस्ट्री में उसका यूज होना चाहिए. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन उसका होना चाहिए जो भी प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हैं. ऐसा कि नहीं यू आर डेवलपिंग समथिंग एंड जस्ट कीपिंग इन योर होम ओनली. देयर इज नो यूज. इट्स न्यू. आई नो इट्स न्यू बट देयर इज नो यूज. So you will not get any patent. So these three criteria should be there so that you will get the patent. One is novelty, second one is non-obviousness, third one is utility.
This three is very much important for getting patent. Terminology associated with patent. So what are the terminology which are associated with patent? Prior act. What is prior act? These are the terminology: prior act, priority date, term of patent. नीचे है ये. These are the basic terminology and is a very important and common use terminology in the patent case. So what is prior act? Prior act, not act. It is act. Prior act. So what is prior act? Prior art are all those information which are disclosed to the public. Which are disclosed to the public. So prior art are those type of information which are not shown to the public. Which are not shown to the public. Suppose you developed a product. There are some information which are attached with the product. But as per the prior art, some information cannot be shown to the public. So these three information cannot be shown to the public. These three information should not be shown to the public. And these four type of information can be shown to the public. So prior act define these things. Which information should not be shown to the public? Maybe it's some harmful, maybe something someone can copy this idea or something like this, so that they will not show to the public. So prior act deals with those information of the product which are not shown to the public. प्रायर आर्ट उस प्रायर आर्ट वो चीज़ होता है जिसमें जो जो इन्फॉर्मेशन को पब्लिक को नहीं देना चाहिए और दिखाना नहीं चाहिए वो सब डिफाइन किया जाता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन को हमें पब्लिक को नहीं दिखाना है, ये बाकी की चीज़ हम दिखा सकते हैं. सो प्रायर आर्ट, while you applying for patent, you need to define all this thought. Prior art क्या है इसमें? Whatever the information you don't want to disclose to public, दिखाना नहीं चाहते हो आप पब्लिक को, वो बता दीजिए कौन सा इन्फॉर्मेशन है वो आप दिखा सकते हैं. सो दीज ऑल डील्स विद द प्रायर एक्ट. प्रायोरिटी डेट. सो प्रायोरिटी डेट क्या है? प्रायोरिटी डेट is the date of first filing given by the patent office to an application. प्रायोरिटी डेट, जैसे कि इसमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है. प्रायर आर्ट, प्रायोरिटी डेट. प्रायर आर्ट मैंने बोल दिया है. प्रायोरिटी मतलब जो इसका मीनिंग जो है, ये वर्ड का मीनिंग जो है उसका अंदर का मतलब भी सही है. प्रायोरिटी मतलब समथिंग यू आर गिविंग इम्पोर्टेंस. Priority date. So priority date is the date of first filing given by the patent office to an application. Okay. So it is the process mean. Let me tell you. When you are developing a product, the product already developed. Suppose the product already developed. So you will apply for the patent. Suppose this is your application. You will apply for the patent. But when you file the application, the date will be there. This is called priority date. Date of filing your application. When you are applying for the patent, of your product, the date of application of your patent, date of application of filing your patent is called priority date. When you are applying, the fast filing, और ये कौन देगा डेट? ये डेट कौन देगा? The office, the patent office will give. The patent office will give this date. So priority date is the date of first filing given by the patent office to an application. आप अप्लाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद डेट एक फाइनल करके वो पेटेंट ऑफिस आपको देंगे.
तो वो डेट जो फाइल हुआ उसका बोलते हैं प्रायोरिटी डेट। और ये डेट का बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिस वेरी मच इंपॉर्टेंट दिस डेट। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू। Sometimes one same process is being carried out by two or more person, but patent will be given to only one. Okay, पहले इतने इतने तक समझते हैं। Sometimes one same process means two people, sometimes two people, एक second. Sometimes two people developing a same product. समटाइम्स इट मे बी समटाइम्स हैपन, इफ समटाइम्स दो लोग एक प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, तो क्या दोनों को पैटर्न मिलेगा? दोनों लोग एक ही प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं एक साथ। उन दोनों को पता भी नहीं है, सपोज ये दोनों दोस्त नहीं है, बाहर के ही, ये अमेरिका से है, ये इंडिया से है, तो दोनों अलग अलग से एक नया प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो दोनों ने एक ही डेट में अपना प्रोडक्ट बना भी लिया सपोज, तो क्या दोनों को मिलेगा? नहीं, उसमें प्रायोरिटी डेट का इम्पोर्टेंस है। इफ टू पीपल वर्किंग ऑन द सेम प्रोसेस, then the patent will be given as per the priority date. The patent will be given as per the priority date. जिसका फाइलिंग डेट आगे था उसको पैटेंट आगे मिलेगा सेम प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब यही है। Sometimes one same process or same product is being carried out by two or more person, but patent will be given to only one. एक लोग को ही मिलेगा। In this case, filing date will be given priority. In this date, the filing date will be given as the priority. Term of patent. Patent का term क्या है? In India, currently the term of patent is 20 years after filing. इंडिया में क्या है? After filing your application, you will get 20 years of your patent rights. 20 years तक आपको राइट मिलता है। But the patent can be renewed yearly by paying the patent fee. But the patent can be renewed yearly by paying the patent fee. But it can be renewed yearly. You just have to pay the fee. That is the renewal fee. You have to give the fee, then they'll automatically renew for next 1 year, next 2 year, like this. Then procedure of patenting. In first step, filing an application at the designated patent office. This is the first step. Application file होगा. You have to apply for the patent. This is the first step. Then the document will be evaluated and examined. So whatever document you have, that will be evaluated. That will be checked. After that, the 3 criteria will be checked. डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद क्या होगा? द 3 criteria as we discussed earlier, the 3 criteria will be checked. Like these 3 criteria: utility, mobility, obviousness, everything. 3 criteria will be checked. Then objections may rise if criteria are not satisfied. Suppose you have 3 criteria you followed, but if one criteria is wrong, so the patent office officials, they will provide an objection. They will object your criteria 2, criteria 3, criteria like this. So in this case, objection may be raised, and the applicant can resubmit the application after necessary changes. So if you are applying for patent and the patent office said some objection, then you can also reapply that by applying necessary changes. उन्होंने जो कहा कि आपके क्राइटेरिया में ये गलत है, आप उसको कुछ ये कीजिए, वो कीजिए, तो आप उसको मॉडिफाई करके दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। ये कह रहा है आफ्टर नेसेसरी चेंजेस के बाद आप दोबारा एप्लीकेशन को रीसबमिट कर सकते हैं। वंस द क्राइटेरिया सेटिस्फाइड, then it is published in the official journal of the patent office. Once the criteria satisfied, once the 3 criteria are satisfied, then it is published in the
पेटेंट ऑफिस, जर्नल ऑफ ऑफिशियल जर्नल ऑफ पेटेंट ऑफिस, उनका एक जर्नल होता है वो पेटेंट का, पेटेंट ऑफिस का। तो उस जर्नल में अगर आपका आपका प्रोडक्ट ने क्राइटेरिया को पास कर लिया तो उनके जर्नल में ये पेटेंट का इंफॉर्मेशन पब्लिश हो जाएगा आफ्टर 18 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। जबकि आपने डेट ऑफ फाइलिंग जब है उसका 18 मंथ के बाद ये पब्लिश हो जाएगा, ऑफिशियल जर्नल में हुआ है, ठीक है। देन इट इज ओपन फॉर थर्ड पार्टी अपोजिशन फॉर 1 ईयर। थर्ड पार्टी अपोजिशन मीन्स बाहर के कोई लोग अगर आपके पैटर्न के ऊपर अपोजिशन कर रहे हैं, सपोज आपने किसी का काम को कॉपी किया है, सपोज आपने किसी का काम को कुछ बिना परमिशन लेके कुछ किए हैं, इन दैट केस अपोजिशन विल बी अलाउड फॉर 1 ईयर। थर्ड पार्टी अपोजिशन विल बी अलाउड फॉर 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर जो भी लोग आपके पैटर्न को देखेंगे, उनका अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका अगर आपने कुछ उनका आइडिया फॉलो नहीं किया है, तो आपका प्रोडक्ट एकदम न्यू है, तो वो सब छोड़ते हैं 1 ईयर के लिए, ताकि अपोजिशन के पार्टी, थर्ड पार्टी अपोजिशन पार्टी की तरफ से कुछ क्वेश्चन ना आए। इफ नो अपोजिशन देन द पैटेंट इज सील्ड और ग्रांटेड। इफ नो अपोजिशन, अगर अपोजिशन नहीं हुआ है तो पैटेंट को ग्रांट किया जाता है। पैटेंट इज सील्ड और ग्रांटेड। इट इज देन पब्लिश्ड इन द पैटेंट जर्नल। इट इज देन पब्लिश्ड इन द पैटेंट जर्नल। उसके बाद ये पैटेंट के जर्नल में पब्लिश हो जाएगा। तो ये फुल प्रोसेस है पैटेंट का। तो ये तो हमारा जो बेसिक था पैटेंट के ऊपर, आईपीआर के ऊपर, वो कवर हो चुका है। सो ये जो नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सब हैंडमेड नोट्स है और ये सब सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया है, और बहुत सारे अच्छा जगह से भी ये थोड़ा मतलब मैं सिंप्लीफाइड करके लिख रहा हूँ, जैसे कि ईपीजी पाठशाला हो गया, ई ज्ञान कोश हो गया, ये सब मटेरियल्स वहीं पे ही है, लेकिन वो थोड़ा मतलब लेंदी फॉर्म में है और वो एलाबोरेटली बहुत सारी चीज़ कवर कर रहे हैं, और उनका टर्मिनोलॉजी भी थोड़ा एडवांस है, जिसकी वजह से कोई रीडर्स को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है, सिंप्लीफाइड करके मैं खुद अपना नोट बना के ये आपको शेयर कर रहा हूँ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।